أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. मफ़हूम तर्जुमा। ये सूरतुल आला की कुछ आयत हैं जिसका तर्जुमा है, शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान रहम वाला है। यकीनन उसने फलाह पाई जिसने खुद को पाकीज़ा किया और अपने रब का नाम लिया, फिर नमाज पढ़ी। लेकिन तुम दुनियावी ज़िंदगी को तरजीह देते हो, जबकि आखिरत की ज़िंदगी बहुत बेहतर और हमेशा रहने वाली है। और यही हमारी जो स्ट्रेस की वजूहात में से एक बहुत बड़ी वजह ये भी है कि हम अल्लाह ताला के अहकाम पे नहीं चलते, अल्लाह ताला पर तवक्को नहीं करते और दुनिया की ज़िंदगी को आखिरत पे तरजीह देते हैं। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह खैर राशिद साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जी हमारा आज 90th वेबिनार है जो कि पीएमए के प्लेटफॉर्म से होता है और इसकी जो हमारी और बॉडीज हैं जिनके इत्तेफाक से हो रहा है, एक तो आज़ाद जम्मू कश्मीर मेडिकल कॉलेज के रुए रवान और प्रिंसिपल साहिब हैं मुलाजिम हुसैन बुखारी। दूसरा विमेन मेडिकल कॉलेज के इश्तराक से होता है। द थर्ड वन इज पाकिस्तान फिजियोलॉजिकल सोसाइटी, देन द पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ पैथोलॉजिस्ट जिनका अभी हमें सर्वर डॉक्टर सर्वर ने बताया है कि प्रेसिडेंट मुलाजम साहब भी सिलेक्ट हो गए हैं, एंड साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ फिजियोलॉजिस्ट। We thank and we welcome Professor Dr. Aftab Alam Khan Sahab today. He is the chairperson for the Department of Psychiatry. He is the professor over there as well in Ayub Medical College, Aftab. He did his MBBS and then he did MRC Psychiatry, FRC Psychiatry, and he has done his MSc in Epilepsy and MESSM, which is from the European Union. Thank you, Dr. Aftab, and over to you now. Assalamu alaikum to everyone, and I'm thankful to Professor Salma Kundi for inviting me. And I have got two of my teachers here, I think, Professor Dr. Salma Kundi and Professor Ayub. I've seen his name, so if it's the same Dr. Ayub. So today I am going to talk about stress management and emotional well-being. I'm sure the topic is well known to all of you, but I'll just like to go through it. Okay. वदीद सबको ऑफ कर दीजिए, सिर्फ आफ्ताब साहब का ऑन रहे। So I think before I go on to talk about stress, I think it's important that all of us revisit and have a look at the definition of health according to WHO. It states that health is a state of complete physical, mental, and social well-being, and not merely the absence of disease or infirmity. I think this definition was formulated in 2001, and before that, the definition of health was only it used to be that it's not merely that it's the absence of disease or infirmity, but this mental, physical, and social well-being was included in 2001. Now let's have a look at the definition of mental health. Mental health is a state of well-being in which an individual realizes his or her own potential, can cope with the normal stresses of life, and can work productively and fruitfully, and is able to make meaningful contribution to the community. तो यहाँ पे भी आप देखें कि one should be able to deal with the normal stresses of life. And from this definition, you can also make out that there could be
normal stressors and abnormal stresses. So स्ट्रेस है क्या, जरा इसको देख लेते हैं. तो stress is a natural response to any demanding situation or event. Uh, Again, this definition tells you that the stress is present with all of us. All of us are exposed to stress on a daily basis. And it's a natural human response which helps us to address challenges and threats in our lives. Again, यहीं से आप देख लें कि हमें स्ट्रेस का सामना तो हर एक को करना पड़ता है, लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप उस स्ट्रेस को मैनेज कैसे करते हैं और उसको फेस कैसे करते हैं. आई थिंक दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. देयर इज सम टॉक अबाउट पॉजिटिव एंड नेगेटिव स्ट्रेस. ये दोनों में क्या फ़र्क है? तो पॉजिटिव स्ट्रेस इज अ स्ट्रेस दैट हेल्प्स अस टू मोटिवेट, दैट मोटिवेट्स अस एंड हेल्प्स अस टू अचीव आवर गोल्स एंड एनहांसेस परफॉर्मेंसेस. एग्जाम्स में देख लें, अगर आपको ऑप्टिमम स्ट्रेस हो, थोड़ा बहुत स्ट्रेस हो, तो आप अपनी जो लेजर एक्टिविटीज़ हैं उनको कट डाउन करते हैं, पढ़ाई को थोड़ा ज़्यादा टाइम देते हैं, थोड़ी सी नींद शायद कम करते हैं और अपनी बाकी चीज़ों को छोड़ छाड़ के अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं. तो दिस इज़ अ पॉजिटिव स्ट्रेस एंड दिस इज़ गुड. But when the stress becomes too much and it starts affecting your mental and physical health, then it is called negative stress, and obviously it affects your performance. आप सब ज़्यादातर लोग पढ़ाते हैं, तो आप देखें एग्ज़ाम्स के दिनों में स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, और अच्छे भले स्टूडेंट्स जो आपको पता होता है अच्छे स्टूडेंट्स हैं, वो एग्ज़ाम्स के दिनों में पैनिक करते हैं. बाद स्टूडेंट्स की सप्ली आ जाती है या साल ज़ाया हो जाता है ओनली बिकॉज़ they were not able to deal with the stress during exams. These are some of the statistics related to stress. According to Gallup in 2019, one third of the people around the world reported feeling stressed, worried, or angry. फिर इसी तरह American Psychological Association 2019 reported that more than 3/4 of the adults reported symptoms of stress, and half of the US adults said that stress has negatively affected their behavior. It's estimated that job stress costs US industry more than 300 billion a year. And public health experts and intellectuals have pointed out that about 75% of the Pakistanis, especially youngsters, express stress, anxiety, or depression. This was in dawn in 2023. लेकिन हमारे पास अपने जो psychiatric figures हैं, वो ये हैं कि about 1 in 4 of Pakistani population are suffering with some sort of mental health problems, and all of us know that stress is a big contributing factor to development of mental illnesses. तो कॉमन साइंस ऑफ स्ट्रेस क्या हो सकते हैं? वो आपके सामने है कुछ साइंस, हम सब लोग इसके साथ आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं कि थोड़ा टेंशन फील करना, खाना पीना छोड़ देना, सर में दर्द होना, थकावट रहना, नींद में कमी आ जाना, एंशियस फील करना, डिप्रेस्ड फील करना, लोगों से कट के रह जाना. और ये है स्ट्रेस रिस्पॉन्स, हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एड्रिनल एक्सिस, एचपीए एक्सिस जिसको बोलते हैं. तो स्ट्रेस के जरिए आपका कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एक्टिंग ऑन द पिट्यूटरी ग्लैंड, एसीटीएच, एंड लीडिंग टू इंक्रीज लेवल ऑफ कॉर्टिसोल. So this is the main HPA axis through which the stress is regulated. And when the stress is too much, the cortisol level is too much, and eventually giving rise to all the problems in the human body. Again, this is a stress curve, और अगर आप इस curve को देखें तो green portion is telling you too little stress, जब आपको बिल्कुल stress नहीं होता, और उस वक्त आप कैसे होते हैं? You're too laid back, you're inactive, you're not really motivated, and eventually your performance suffers. When you have optimum stress, you perform really well. And when you're too much stress, you get burnt out, and eventually you start having physical and mental health problems. Again, ये वही चीज़ें हैं कि the effect of stress on the body, and stress affects anything from your head to toes. हमारी सोसाइटी में स्ट्रेस के बहुत जो बड़ा इफेक्ट है वो हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम्स पे आता है. आप आई रिमेम्बर वर्किंग इन द यूके, और हमारा एक गोरा प्रोफेसर था,
वो मुझे याद है हमें हर वक्त बताते थे कि एशियंस आर ऑब्सेस्ड विद देयर बाउल्स। तो वो दैट बेसिकली हमारी जो साउथ एशियन पॉपुलेशन है, द इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस इन आवर गट, which is by the way now well documented in research, mind gut axis, mind gut ब्रेन कट एक्सेस, उसके ज़रिए। लेकिन पाकिस्तान में जो डॉक्टर्स प्रैक्टिस करते हैं उनके पास ये बड़ा कॉमन सिम्टम है, डॉक्टर साहब मेरे मैदे की गैस सर को चढ़ जाती है। तो ये स्ट्रेस का आपकी बॉडी सर से पाँव तक हर जगह पे इफेक्ट होता है। प्रैक्टिसिंग डॉक्टर्स को पता है कि हमारे पास जब स्ट्रेस के इफेक्ट्स के साथ लोग आसे आते हैं उनको हेडेक हो सकता है, they could have chronic cough, they could have gastroesophageal reflux, IBS, body aches, backache, disturbances in sexual functioning, disturbances in sleep, heart beating fast. They tend to get attracted toward drugs and alcohols, wrong decision making in life. So stress can affect almost every part of your body. This was just a, satire, asking from elephant, what do you do when life gets so crazy that you're not sure if you can handle it? And the elephant says, well, I always say you can't go wrong with a mud bath. So he goes into the mud and starts splashing it. ओके, सो ये तो हो गया कि व्हाट इज स्ट्रेस और स्ट्रेस होता क्या है और स्ट्रेस आपको इफेक्ट कैसे करता है। तो आई थिंक व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट स्ट्रेस मैनेजमेंट, इट्स द फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू फोकस ऑन इज वी नीड टू आइडेंटिफाई सोर्सेज ऑफ स्ट्रेस। अब स्ट्रेस क्या होता है ये भी एक बड़ी लंबी बहस है, लेकिन स्ट्रेस की बहुत सारी किस्में हो सकती हैं। स्ट्रेस कुड बी रिलेटेड टू योर पर्सनल लाइफ, सच एज relationship issues, health concerns, financial worries. It could be work related, job demands, work relationships, lack of control autonomy, toxic work environment, not having a good boss, too much politics going on. Environmental stress could be noise, pollution, overcrowding, traffic, chronic physical illnesses, you know, जैसे जैसे हम देख रहे हैं कि population बढ़ रही है, average age is going up. As a result, people living with chronic physical health problems are going up. So having a chronic physical health problem is enough of a stress, which can lead to, long-term psychological and physical health problems. So it's important that we identify a source of stress. And obviously it means that जब हमें लगे कि कोई ना कोई स्ट्रेस हो रहा है तो हम चीज़ों के ऊपर रिफ्लेक्ट करें और आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें कि व्हाट इज द कॉज। अच्छा, स्ट्रेस मैनेजमेंट की टेक्निक्स, अगेन इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस एंड ऑल ऑफ यू नो अबाउट इट, बट you'd be surprised to see कि हम पता होने के बावजूद इन चीज़ों के ऊपर अमल नहीं करते या अमल करने का टाइम नहीं होता। तो आई थिंक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो एक्सरसाइज है। इफ़ वी कैन डू एटलीस्ट, जो अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की भी गाइडलाइन है कि इफ़ यू आर एबल टू डू 30 to 45 minutes of exercise every day, 5 days a week, that is good for our heart and it is good for our mind. So exercise is important. Deep breathing or breathing exercises, yoga, meditation, these are very in these days, and I think they work really well. One of the simplest yoga exercise or breathing exercise that we tell people is deep breathing. So the way you do it is close your mouth tightly, take a deep breath in as much as you can, hold on your breath for a few seconds, and then exhale slowly. Do it about 20 to 30 times sitting in a quiet room, and that helps a lot. Sometimes you can combine deep breathing with nice imagery. You can have various types of massages. These days people talk about aromatherapy, music therapy, all of those things. So they are really good in reducing stress. Looking at our daily routine, one thing that the modern lifestyle makes us miss is sleep hygiene. Sleep hygiene के बारे में आप सबको पता है
if we want to lead a good life, if we want to manage our stress, having a good 7 to 8 hours sleep is important. So sleep hygiene ke basically the steps are that you go to sleep same time every night, or try to go to sleep same time every night, and preferably before 11 p.m. और सुबह भी एक फिक्स टाइम के ऊपर जागने की कोशिश करें, बॉडी क्लॉक को सेट करें। उसके अलावा कोशिश करें कि आप दिन को ना सोएं। जो स्टिमुलेटिंग ड्रिंक्स हैं, कैफिनेटेड ड्रिंक्स हैं, उनका इस्तेमाल कम करें। So, having a good sleep hygiene is important. Among stress management technique, what we advocate a lot these days is time management. I think time management is something that differentiates people who are average and people who are brilliant and excellent performance. People are unable to manage their time properly. पुराने ज़माने में people would do it by diary. आजकल आप अपने मोबाइल्स में डायरी रख सकते हैं. Time management is important. Prioritizing your tasks that are urgent. They need to be, kept separately. Then the tasks that are important, that less important, the tasks that could be delayed. So time management is really important. Setting realistic goals is important. I think what we have seen over time is people like us, people in medical profession, people who are high achievers, set unrealistic goals for themselves, and in pursuit of those unrealistic goals, then unnecessarily stress themselves out. So it's important that we are able to set realistic goals. So अगेन अगर हम उसको रिकैप करें तो उसमें यह है कि अपनी डेली रूटीन, एक्सरसाइज, मेडिटेशन, योगा, स्लीप हाइजीन, टाइम मैनेजमेंट, सेटिंग रियलिस्टिक गोल्स, हेल्दी कोपिंग स्ट्रेटजीज. अब स्ट्रेस इज इनएविटेबल, इट्स पार्ट ऑफ आवर लाइफ. ये एक चीज़ है कि आप स्ट्रेस को आइडेंटिफाई करें. ये एक और चीज़ होगी कि आप अपनी डेली रूटीन में इस तरह के काम करें कि जो इनएविटेबल स्ट्रेस हम सबकी लाइफ में है हम उसको मैनेज कर सकें. पिछली स्लाइड में हम उसकी बात कर चुके हैं. नाउ इट्स अबाउट डेवलपिंग हेल्दी कोपिंग स्ट्रेटजीज, and unfortunately most of us do not have those coping strategies. Coping strategies में सबसे important है positive mindset, and it is easier said than done. Over a period of time, maybe because of our life experiences, maybe because of the things happening around us, we or most of the people tend to develop a negative mindset, a pessimistic mindset. So it's important that we are able to remind ourselves in a positive way of the good things that are happening in our life. And उसमें positive self-talk का बड़ा important है कि आप में से बहुत सारे लोग शायद वाकिफ होंगे cognitive distortions के कि जब आप when you are stressed you tend to perceive things negatively, and if you consciously try to replace negative thoughts with positive thoughts, it helps us a lot. And you can do that by sitting alone and trying to close your eyes and trying to replace negative thoughts with positive thoughts. प्रॉब्लम सॉल्विंग, जब आप अपने लाइफ में स्ट्रेस को आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो उसके बाद इट्स इम्पॉर्टेंट दैट यू आर एबल टू डू समथिंग अबाउट इट. फॉर एग्जांपल, मैं आपको अपनी पर्सनल लाइफ से एक एग्जांपल देना चाहूँगा. आई वाज इन द यूके फ्रॉम 2003 to 2013, and there was a time 2011 when I started working as a consultant in London. Very busy team, and I worked there for about 6 months, and I started having some physical health problems such as GI upset, palpitations, blood pressure fluctuation. And, I had a look at it and I tried to reflect on the situation, and I came to the conclusion that it was related to my work related stress. So I quit the job, moved to a less busy job in a peripheral area, and my health concerns were solved at the time. सो जब हम अपनी लाइफ में स्ट्रेस को कॉज ऑफ स्ट्रेस को आइडेंटिफाई करते हैं, और वो कॉज ऑफ स्ट्रेस जो मॉडिफाइबल है, कुछ तो अनफॉर्चुनेटली अनमॉडिफाइबल होते हैं, उनका आप शायद कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो मॉडिफाइबल कॉज ऑफ स्ट्रेस हैं उनका चार्ज लेके उनको आप एक्ट करें तो इट हेल्प्स अ लॉट. प्रोफेसर राशिद साहब तिलावत के दौरान बात भी कर रहे थे नमाज की और कुरान की. ऑब्वियसली रिलीजन हेल्प्स, being close to religion, having good faith, it helps a lot. But I think it's also important to understand कि स्ट्रेस की वजह से या मेंटल हेल्थ जो प्रॉब्लम्स होते हैं
वो मजहबी लोगों को भी हो सकते हैं और गैर मजहबी लोगों को हो सकते हैं। जिस तरह के बीमारियां मजहबी लोगों को भी हो सकती हैं, गैर मजहबी लोगों को भी हो सकती हैं। बट येस, इट्स प्रूवन इन रिसर्च दैट बीइंग क्लोज टू रिलीजन, offering prayers, being close to Allah, it helps a lot in all physical and mental health problems. Then the third point is seeking support, talking to friends, family, or a professional for emotional support or practical advice. That is really great. Uh, हम अभी over the last couple of years और decades जब हम देख रहे हैं कि लोगों के पास ये सपोर्ट अवेलेबल नहीं होती, उनके पास कोई ऐसा दोस्त, कोई ऐसा बंदा नहीं होता जिसके साथ वो इन इन कॉन्फिडेंशियल नॉन जजमेंटल वे आप अपनी चीज़ों को डिस्कस कर सकें। अगर ऐसा हो तो दैट्स अ ग्रेट हेल्प। और अगर आपको लगे कि आपका स्ट्रेस लेवल जो है वो इतना बढ़ गया है कि वो आपको बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है एंड यू आर अनएबल टू डू समथिंग अबाउट इट, देन वहाँ पे यू नीड सम प्रोफेशनल हेल्प इन द फॉर्म ऑफ अ साइकोलॉजिस्ट और अ साइकेट्रिस्ट, या किसी से आप बात करके देख सकते हैं। आजकल तो ऑनलाइन सेल्फ लर्निंग टेक्निक्स अवेलेबल हैं, ऑनलाइन सीबीटी अवेलेबल है। तो इट्स इम्पॉर्टेंट दैट वेयर प्रोफेशनल हेल्प इज नीडेड, यू डू सीक प्रोफेशनल हेल्प। और हम यही कहते हैं अक्सर कि मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स या स्ट्रेस रिलेटेड प्रॉब्लम्स को लोग अमूमन इग्नोर करते हैं एंड टेक देम फॉर ग्रांटेड। सो इट्स इम्पॉर्टेंट दैट वी आर एबल टू सीक प्रोफेशनल हेल्प। यहाँ पे I think one thing that I would like to mention briefly, because I think it is related to overall emotional well-being and stress management, is emotional intelligence. This is something that is talked about a lot these days. And I'm sure all of you are familiar with this thing. Basically, it's emotional intelligence is the ability to understand one's own emotions, and its ability to understand the emotions of people around you, and then taking into account both understanding of your own emotions and understanding of the emotions of the people around you, helping you to make best possible decisions, is called emotional intelligence. Good thing is that emotional intelligence can be nurtured and it can be developed over a period of time. Unlike IQ, which is inborn and genetic predominantly, this is something that can be nurtured. So emotional intelligence has got 4 or 5 components, and the first thing is about self-awareness. Be aware of your own emotions as they arise. So again, this is something that would come from the power of reflection. Reflection is something that we as teachers, I think we are all familiar with, कि जब कोई वाकया होता है आपकी ज़िंदगी में, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में, जब वो वाकया हो जाता है तो आप उसके बाद बैठते हैं, उस वाकये के बारे में सोचते हैं और देखते हैं कि वो वाकया क्यों हुआ, कैसे हुआ, और अगर यही वाकया दोबारा हो तो आप इसके साथ कैसे डील करेंगे और अपनी आप को कैसे इम्प्रूव करेंगे। दिस एक्सरसाइज इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। सो सेल्फ अवेयरनेस इज बेसिकली, सेल्फ अवेयरनेस एक ऐसी चीज है which develops from various reflections. So things happening in your life, the way you have reacted in various situations, understanding your own emotions, and eventually you develop self-awareness. Leading on from self-awareness is self-regulation, that once you're aware of your emotions, then you're able to regulate them. और इसमें बड़ा important जो role है वो feedback का है. So if I work in a team, if I work in an organization, it is important that I take feedback and honest feedback from people around me. I remember working in the UK, तो हमारी जब भी हम कहीं पे काम करते थे तो हमारा 360 फीडबैक होता था। हमारी टीम में काम करने वाले तमाम लोगों से anonymous feedback उनको देते थे. That would help us in recognizing our weaknesses and strengths, and being self-aware, because unless you're aware you won't be able to do anything about those things. So self-awareness and self-regulation is important. Then उसके बाद जो अगला स्टेप है वो है self-motivation, you stay motivated to do something. But empathy historically is defined as ability to put yourself in the other person's shoes and try to feel in the same way. Although it is impossible to put yourself in the other person's shoes, but again, this tells you that being able to understand the emotions of others is really important. And आखिर में जब आप
सेल्फ अवेयरनेस भी है, सेल्फ रेगुलेशन भी है, सेल्फ मोटिवेशन भी है, you have understood the emotions of others, then all these things help you in the management of relationships. So again, these are the 5 steps of emotional intelligence. I think we can skip that. So differences briefly between EQ and IQ. IQ is primarily concerned with individual ability to solve problems, use logic, and grasp and communicate complex ideas. And EQ is more in terms of emotions. IQ is more related with academic and professional success, while EQ is more related with leadership, team collaboration, and interpersonal relationships. So, uh, um, I remember recently reading a book, and the crux of that book was that the difference between an average performer and top performer in any field appears to be EQ. Previously, people thought it's IQ, but I think the understanding among all the top leaders in the world is people with high EQ perform way better than people with low EQ. So it's important that we can work on developing EQ. How can we improve our emotional intelligence? Again, आई थिंक जो चीज़ यहाँ पे नहीं लिखी वो इम्पोर्टेंट है फीडबैक। फीडबैक अपने इर्द गिर्द के लोगों से लेना, अपने फ्रेंड से, अपनी फैमिली से अपने बारे में लेना, ऑनेस्ट फीडबैक लेना और उस फीडबैक के ऊपर फिर काम करना। दैट इज आई थिंक इम्पोर्टेंट इन इम्प्रूविंग योर इमोशनल इंटेलिजेंस। दूसरा, दूसरों के इमोशंस को समझना, कि जो लोग आपके सामने इंटरेक्शन में आते हैं उन लोगों के इमोशंस को समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। और हम सब ने, शायद आप लोगों ने कम्युनिकेशन स्किल्स वर्कशॉप अटेंड की होंगी या लोगों को कराई भी होंगी, जिसमें हम बात करते हैं कि आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके फेशियल एक्सप्रेशंस, आपके जेस्चर्स से आप चीज़ों को, क्यूज को कैसे पिक करते हैं। सो इट्स इम्पॉर्टेंट दैट वी इंटरेक्ट विद अदर पीपल, प्रोफेशनल, particularly in professional settings, you're able to pick cues from their body language and eye contact and gestures, and you're able to listen to them in a very, I mean, active listening is listening with intent. Active listening is listening with all the 5 senses. So जब आप ये करते हैं तो फिर आप दूसरों के इमोशंस को भी समझ सकते हैं। और अगर आप ये दोनों काम करते हैं तो उसके बाद फिर ग्रेजुअली आप प्रैक्टिस कर सकते हैं कि आप अपनी कम्युनिकेशन को या ईक्यू को कैसे इम्प्रूव करें। So this was briefly about इमोशनल इंटेलिजेंस। इसके ऊपर जिस बंदे ने सबसे ज़्यादा काम किया हुआ है वो डैनियल गोलमैन है, द फेमस साइकोलॉजिस्ट। यहाँ पे भी देखिए इसने लिखा हुआ 80 to 90% of the competencies that differentiate top performance are in the domain of emotional intelligence. Again, pretty important. And I think all the great leaders in the world have got high EQ. Ironically, some people describe people with high EQ as manipulators, people who are able to manipulate others' emotions. I don't know how far that is true, but this is one take on people with high EQ. But nevertheless, it's important that we're able to develop and nurture EQ in ourselves, in our students, because I think that is important. आप अपने इर्द गिर्द काम में भी देखें कि कुछ लोग जो हैं अपने वर्क प्लेस में दे आर वेरी प्रोफेशनल, दे आर गुड इन वट एवर दे डू, बट दे आर अनएबल टू गेट थिंग्स डन इन द वे some other people would be able to get. So EQ is important. And the last couple of slides, emotional well-being is the ability to successfully handle life stresses and adapt to change in difficult times. वही है जो हमने मेंटल हेल्थ की डेफिनेशन शुरू में पढ़ी थी कि good mental health is, or mental health is when you're able to deal with the normal stresses of life. So again, emotional well-being is the ability to successfully handle life stresses and adapt to change in difficult times. And emotional intelligence is interconnected to emotional well-being. So if you are emotionally intelligent, you are more likely to be emotionally well. So there's a strong positive correlation between these two things. I think ये वही चीज़ें मोर और लेस रिपीट हो रही हैं, लेकिन इसमें एक चीज़ जो है वो मी टाइम है। Me time is something that is talked about a lot, particularly in the West over the last decade or so. और ये देखा गया है कि professionals and people who are busy people, they do not have enough me time. Me time is described as a time that you spend on yourself. That is the time maybe
away from your family. That is a time away from your work. That is your time in the things that you enjoy doing. I mean, so everyone has a different me time. Uh, your me time could be with your friends. Your me time could be alone. Your me time could be listening to music. Your me time could be traveling. But it's important that all of us have a me time, which is independent of all our responsibilities. I think rest of the things have been spoken about. Mindfulness. Mindfulness is something that is again very in these days. और mindfulness हम सारे लोग I think we are not very mindful of the things that we do. और अक्सर हम कहते हैं कि वी आर लिविंग ऑन एन ऑटो पायलट. हम गाड़ी चला रहे हैं, लेकिन हम गाड़ी चलाने को एंजॉय नहीं कर रहे हैं. हमारा ज़हन किसी और काम में चल रहा है और गाड़ी चलाना ऑटो पायलट पे है. हम अपना कोई प्रोफ़ेशनल काम कर रहे हैं, उस वक़्त भी शायद जिस तरह माइंडफुल होना चाहिए, उस तरह से माइंडफुल नहीं है. हम खाना खा रहे हैं, लेकिन हमारा ज़हन वहाँ पे नहीं है. हम अपनी फैमिली के साथ हैं, लेकिन हमारा ज़हन वहाँ पे नहीं है, ज़हन कहीं और पे है. सो इट्स इम्पोर्टेंट दैट वी आर एबल टू प्रैक्टिस माइंडफुलनेस. I think the use of mobile and our screen time and screen addiction, that has contributed a lot to being less mindful over the years. Uh, मैं एक दफ़ा एक माइंडफुलनेस वर्कशॉप में हम गया, तो हम लोग कोई 10 पार्टिसिपेंट्स थे, और हमारा जो माइंडफुल ट्रेनर था, आई रिमेम्बर, उन्होंने हमारे सबके सामने कुछ स्पेशल ब्रेड पड़ी हुई थी, फ्रेंच ब्रेड थी, तो वो हम सबके सामने रखा हुआ था एक-एक पीस। तो उसने हमें कहा कि आई वुड लाइक ऑल ऑफ यू टू लुक एट दिस पीस ऑफ ब्रेड एंड विजुअली एक्सप्लोर इट, डू नॉट टच इट, जस्ट विजुअली एक्सप्लोर इट एंड टेल मी व्हाट डू यू सी। तो उसने हम सबसे डिस्क्रिप्शन कराई। फिर उसने कहा आप इसको हाथ में पकड़ें, फिर हमने इसको हाथ में पकड़ के फ़ील किया। फिर उसने कहा आप अपने नाक के पास ले जाके इसको स्मेल करें, उसको स्मेल किया। फिर उसने कहा आप छोटा-सा बाइट लें, क्लोज़ योर आइज़ एंड एन्जॉय इट। तो वो 5-6 मिनट की उसने एक्सरसाइज़ कराई और हमें बताया कि दिस इज़ हाउ वन नीड्स टू बी माइंडफुल। व्हेन वी आर डूइंग समथिंग, वी नीड टू बी इन दैट पर्टिकुलर थिंग विद ऑल आवर 5 सेंसेस एंड नॉट बी इन एन ऑटो पायलट। बीइंग माइंडफुल हेल्प्स अस अ लॉट टू रिड्यूस स्ट्रेस। सो इट्स इम्पोर्टेंट। उसके ऊपर बहुत सारी किताबें हैं, वीडियोज़ हैं यूट्यूब के ऊपर। तो वी नीड टू बी डूइंग दैट एंड इन बीइंग माइंडफुल ऑल्सो थिंक दैट ये जो हमारा मोबाइल है, we have become hostage to our mobiles and screen times. So I personally realized it a couple of years ago that my screen time was eating into my family time and it was eating my leisure time. So I took charge of that. और उसके बाद मैंने दिन में 5 से 6 घंटे अपना मोबाइल डाटा एंड वाईफाई आई स्विच इट ऑफ. सो मोबाइल इज ओनली available for phone calls, and I do not use mobile for 5-6 hours every day. That's helped personally, that has helped me to become more mindful and reduce the level of stress. क्योंकि मोबाइल के साथ वी बिकम ऑब्सेसिव. हमें कोई मैसेज आए या ना आए, हमें 2-3 मिनट बाद व्हाट्सएप चेक करते हैं, फेसबुक पे जाते हैं, इंस्टा पे जाते हैं. उसको हम अक्सर कहते हैं फोमो, फेयर ऑफ मिसिंग आउट. सो दैट इज इम्पोर्टेंट दैट वी बिकम माइंडफुल ऑफ द सिचुएशंस. क्वालिटी स्लीप की बात पहले भी हो चुकी है, एंड आई थिंक ये बातें भी हम कर ही चुके हैं. Having strong social connections, I think it is important that we have, a network of friends or acquaintances, people that we can share some good times with, develop a hobby such as reading, hiking, painting, traveling, doing something that makes you really happy. I mean, in the West, it is really common for people, हमारी तरह के लोग भी जो doctors हैं, professors हैं, after a couple of years, they take a career break, 6 months कहीं चले जाते हैं, they become chef or do something else, some voluntary work, come back fresh and then they enjoy their work. I mean ये culture हमारे यहाँ तो है नहीं, और जिस तरह की हमारी society है, मे बी हमारे लिए करना मुश्किल होगा. लेकिन just to emphasize the point, it's important that we have social connections, important that from time to time we are able to break this monotonous routine that all of us have got into, and do something differently. ये एक फ़िल्म है, द परसूट ऑफ हैप्पीनेस, आप लोगों ने शायद देखी है, जॉन विल्स की, या नहीं देखी, लेकिन ये एक फ़िल्म है. द गाय इज़ स्टक इनटू डीप problems, and with his emotional intelligence, resilience, he's able to overcome those problems. So I thought ये जब मैं स्टूडेंट्स के साथ
बात करता हूँ रिजिलियंस, इमोशनल वेलबींग, इमोशनल इंटेलिजेंस की, तो ये फिल्म ज़रूर रेकमेंड करता हूँ। तो आप में से जिन लोगों ने देखी है वो दे वुड नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, और जिन्होंने नहीं देखी आई वुड रेकमेंड कि देखें, उनको फ़ायदा होगा। So, these are some references, and I think that's about it. Now we can. Okay, thank you. That was a great piece of talk, Dr. Saab. Really thoroughly enjoyed it. Any questions from the audience? Please raise your hands. And I can see Dr. Kaisar over here. Kaisar Saab, is the Secretary General PMA. Would you like to add something? Thank you very much, Madam. Actually, it was a fantastic presentation. और ये मैं समझता हूँ कि इसमें बहुत सारी बातें ऐसे थी कि जो कि मुझे भी नहीं पता, और मैं समझता हूँ कि हम जब टेंशन में होते हैं तो हमें जो है वो ये सीखना पड़ता है कि हम उसको कैसे रेक्टिफाई करें। दूसरी, हमें ये भी मुझे पता लगा कि मेरी बेगम हमेशा मुझे कहती रहती थी कि आपने खाया क्या। तो मैंने कहा हाँ यार, मुझे तो पता ही नहीं, क्योंकि मैं खाते हुए फोन पे भी बात कर रहा हूँ, टीवी भी देख रहा हूँ। तो ये मेरी अब मैंने बहुत इसको कम कर दिया, अब नहीं करता हूँ। लेकिन ये बात दुरुस्त है प्रैक्टिकली कि ये मेरे साथ होता रहा है कि मैं खा के निकल गया, मुझे पता ही नहीं चला क्या बना है। तो और उसमें फिर झगड़े भी होते थे। मेरा एक सवाल ये है कि ये जो स्लीप का टाइम है, डॉक्टर साहब ने जो बताया ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि स्लीप हमारे यहाँ मेजॉरिटी लोग, अभी आज संडे के दिन देखें तो मेजॉरिटी रोड जो है वो सन्नाटा होता है, लोग देर तक सोते हैं और रात में देर तक जागते हैं। अब तो खैर सैटरडे तो मजे आते हैं, सैटरडे को तो खैर ये फीलिंग होती है कि संडे को छुट्टी है। बट इन ऑल डेज, वीक डेज में भी लोग जो है 2 बजे 3 बजे, पर्टिकुलरली जो हमारा यंग जनरेशन है जो स्टडी कर के बहाने रात भर जागता है, और उनकी उनकी पेरेंट्स या उनकी मदर ये कहती हैं कि नहीं ये तो रात को फजर की नमाज पढ़ के सोती है। उसके बाद तो मेरे पेशेंट्स आते हैं जो मेरे पास, यंग लड़के आते हैं जो प्रॉब्लम्स में, बेसिकली आफ्ताब साहब आई एम ईएनटी सर्जन, और मेरे पास जो ईएनटी रिलेटेड और थ्रोट रिलेटेड बहुत सारे ऐसे यंग बच्चे आते हैं, तो जिसको मैं अपने सही समझता हूँ और उसको डायग्नोस करता हूँ कि उनकी इम्यूनिटी का प्रॉब्लम है। और इम्यूनिटी जो बूस्टअप होती है वो प्रॉपर स्लीप से, जैसे आपने कहा कि 7 to 8 आवर्स। मुझे एक बात ये बताएं कि ये चीज कुरान में भी लिखी हुई है कि और जब मगरिब की अजान हुआ करे तो अपने काम बंद किया करो, एंड मेडिकल साइंस भी यही कहती है कि 7 से 8 घंटा रात के वक्त सोना बड़ा जरूरी है। अब मुझे पेशेंट आके कहते हैं कि डॉक्टर साहब नहीं, मैं 7 से 8 घंटा तो कर लेती हूँ, मैं रात को, हम सोते हैं तकरीबन 1:30-2 बजे, उसके बाद सुबह मैं 5 बजे उठती हूँ, बच्चे को तैयार करके स्कूल भेज देती हूँ, और बच्चा चला जाता है या बच्ची चली जाती है, उसके बाद मैं आकर सो जाती हूँ। फिर मैं उठती हूँ 11-12 बजे 1 बजे, और बच्चे के आने का टाइम होता है, तो मेरा तो 7-8 घंटे से ज्यादा मैं सो जाती हूँ। तो क्या ऐसा करना ब्रेन के लिए सही है, जो कि मैं अपना पर्सनली समझता हूँ कि रात को कंटिन्यूअसली 7 to 8 आवर्स सोना बेहतर रहता है। दूसरी बात यह है कि जो हमारे डिफरेंसेस होते हैं, चाहे वो फैमिली डिफरेंसेस हो, चाहे हमारे कुलीग के साथ डिफरेंसेस हो, चाहे हमारे पेशेंट्स के साथ डिफरेंसेस हो, उसमें हमें उस वक्त क्या करना चाहिए? क्या उस चीज को हमें कायल करने के लिए, एक दूसरे को दिखाने के लिए कि नहीं मैं आई एम राइट, यू आर रॉन्ग, आई एम राइट, तो क्या ये करना चाहिए? या हम उसको नेग्लेक्ट करें, उसको टॉलरेट करें और इग्नोर करें कि ठीक है भाई, यू आर राइट? इसमें टेंशन बहुत होती है, तो इसको किस तरह से सेटल करना चाहिए? ये मेरे सवाल है, वैसे तो बहुत सारे और हैं, लेकिन प्लीज आफ्ताब साहब, थैंक यू वेरी मच। Thank you for a very comprehensive overview and comments and question as well. तो दोनों चीज़ों का मैं कह दूं, sleep we know from scientific study and research कि वो लोग जो नाइट शिफ्ट वर्कर्स होते हैं,
जो रातों को काम करते हैं, जैसे आप मगरब में देखें टेस्कोज, एस्टर्स, लिडल, लोग नाइट ड्यूटी वर्कर्स होते हैं, उनमें ना सिर्फ साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स बल्कि फिजिकल हेल्थ प्रॉब्लम्स सच एज डायबिटीज, हाइपरटेंशन, इस्कीमिक हार्ट डिजीज, इनका खतरा मोर देन डबल हो जाता है। तो जाहिर है वो जो लोग ना रात को काम करते हैं और दिन दिन को फिर सोते हैं, तो रात की नींद का कोई सब्स्टिट्यूट दिन की नींद नहीं है। ये 7 to 8 आवर्स ऑफ डे टाइम स्लीप नहीं है, ये 7 to 8 आवर्स ऑफ स्लीप है। और हमारे पास मुख्तलिफ स्टडीज़ हैं जो बताती हैं कि द बेस्ट टाइम टू स्लीप इज़ बिटवीन 10:30, 11 to 5:30 इन द मॉर्निंग। इसका रिप्लेसमेंट दिन के नींद नहीं है। और ये फिजियोलॉजी के नॉलेज से हमें पता है, सर्केडियन रिदम, बॉडी क्लॉक, वो चीज़ें सारी, मेलाटोनिन, जस्ट बिफोर द ऑनसेट ऑफ नाइट मेलाटोनिन स्टार्ट्स रिलीजिंग, और वही टाइम है जिस वक्त आपको नींद फिर अच्छी आती है। तो रात की नींद का मुतबादिल कोई नहीं है। अनफॉर्चुनेटली द मॉडर्न लाइफ स्टाइल इन्वॉल्व्स स्टेइंग लेट एंड टिल मॉर्निंग एंड देन गोइंग टू स्लीप इन द मॉर्निंग। यंग जनरेशन ऑलमोस्ट सारे इसी तरह करते हैं। तो आई डोंट नो, हमें कोई उनके साथ उनको दरमियानी राह अख्तियार करनी चाहिए। ज़ाहिर अब ये हमारे कल्चर का शायद हिस्सा बन चुका है रात को 1, 2, 3 बजे तक जागना, स्पेशली वीकेंड्स पे। तो इसके ऊपर सोचने की ज़रूरत है। दूसरा, आपने वर्क प्लेस की बात की कि वर्क प्लेस में हमारे साथ बहुत सारे कॉलीग्स होते हैं। तो वर्क प्लेस पॉलिटिक्स, ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी, ये तो एक एक अलग बहुत बड़ा टॉपिक है कि हमें कैसे काम करना चाहिए। हम में से वो लोग जो अपनी अपनी टीम्स के इंचार्ज हैं, लीडर्स हैं, हमें सबसे पहले अपने आप को भी देखने की ज़रूरत है कि आर वी एग्जिबिटिंग द राइट लीडरशिप सेट ऑफ स्किल्स that we need to be. I mean, leader is somebody who does things first and then asks others to follow. सो फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक काम खुद नहीं करता और अपनी टीम से एक्सपेक्ट करता हूँ तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इफ़ वी आर हेडिंग ए टीम, वी नीड टू बी एबल टू एग्जिबिट गुड लीडरशिप क्वालिटीज़। उसके बाद टीम में कल्चर को डेवलप करना बड़ा ज़रूरी है। जिस जगह पे भी आप काम करते हो, वो कल्चर ऐसा हो कि जिसमें ओपननेस हो, ऑनेस्टी हो, ट्रांसपेरेंसीज हो, लोग एक दूसरे के बारे में फीडबैक ओपनली आके डिस्कस कर सकें और उसको पर्सनली ना लें। अगेन, इट इज़ ईजियर सेड देन डन। लेकिन जो टीम लीडर्स हैं वो अपनी टीम्स में इस किस्म का कल्चर डेवलप करने को कर सकते हैं। शायद आप जो बात मेरे ख्याल में सर कर रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली हम जहाँ जहाँ पे भी काम करते हैं वहाँ पे पॉलिटिक्स, लेग पुलिंग, यू नो जेलसी, प्रोफेशनल जेलसी, ये चीज़ें चलती रहती हैं। तो आई गेस इमोशनल इंटेलिजेंस विल हेल्प अस टू डील विद दोज सिचुएशंस। एंड अगेन आई वुड लाइक टू रिमाइंड आवरसेल्व्स कि इमोशनल इंटेलिजेंस इज being able to understand your own emotions, understanding the emotions of others, having the ability to read others' body language, eye contact, facial expressions, and then trying to find out a middle way, which is a win-win situation for everyone. Not easy, difficult. तो आपने जो पर्टिकुलर सवाल किया था कि बंदा आपके पास आए और आप उसको क्लियरली उसको वहीं पे रोक दें, ना कर दें। आई थिंक जो भी हम काम करें वो काम ऐसे करें जिससे इंसल्ट ना हो, जिससे दूसरे बंदे की सेल्फ रिस्पेक्ट मुतासिर ना हो, और हम उसको ठीक काम भी करवा दें, उसकी गलती से भी उसको हटवा दें और उसको हर्ट किए बगैर, और शायद प्राइवेटली और पब्लिक में ना करें, प्राइवेटली करें। Thank you so much, एक चीज Aftab मेरे sir, जहन में that was such a good answer. एक मिनट कैसर भाई, जी। आखिर में वोट ऑफ थैंक्स में फिर आप बात कर लें। अभी डॉक्टर सत्तार हैं एजीके से, उन्होंने हैंड रेज किया है, उनका जवाब दे देते हैं। Assalamu Dr. alaikum Sattar, ji. unmute yourself, Assalamu alaikum ji. please. Am I audible? Yes, you are. Okay, Dr. Abdul Sattar, I'm working as director in expanded program immunization AJK. मेरा थोड़ा सा वीडियो का प्रॉब्लम होगा तो मैं ऑडियो ही बात करूंगा, इंटरनेट कनेक्टिविटी का इशू है। डॉक्टर साहब का बहुत शुक्रिया जी, डॉक्टर साहब ने बड़ी एनलाइटनिंग पूरी एक प्रेजेंटेशन दी, और रियली बीइंग अ डॉक्टर समटाइम्स वी आर जस्ट ignoring the very simple things which could have been managed in the other way and getting the things done, and they can help us doing all these things. अब इस चीज को देखते हुए मैं थोड़ी सी जनरल, चूंकि आजकल की जो एक सोसाइटी हमारी, बीइंग जस्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ आवर कंट्री पाकिस्तान, we are under lot of burden and stress from all around, multifactorial reasons होती हैं। तो जो भी इनकी डॉक्टर कैस साहब ने जो एक बात कर ली उसमें कि जो स्लीप के हवाले से, और मेरा थोड़ा सा ये एक मतलब प्रेजेंटेशन नो डाउट्स वेरी गुड इनफ, वेरी टॉप टू द बॉटम, इन्होंने इस चीज को टच किया। मेरा थोड़ा सा एक होगा कि जो जितनी भी चीजें एज ए डॉक्टर एज ए, इस तरह तो हम चीजों को पिक कर ही रहे होते हैं, लेकिन थोड़ा सा अगर नीचे जाए ना तो ये चीजें बड़ी कॉमन होती जाती हैं, और वेरी सिंपल थिंग्स कैन बी यूज्ड टू मैनेज दीज थिंग्स। उसमें मतलब मैं जो बात करूंगा, जिस तरह एक मैनेजर इवन अगर पोजीशन में बैठे हुए हैं, और डॉक्टर आफ्ताब साहब ने बात भी की इसमें कि हम वी आर गेटिंग द थिंग्स मैनेज्ड, वी ट्राई टू मैनेज द थिंग्स वन द अदर,
but being a leader, because as a leader you'll have to take the lead and you'll have to lead from the front. तो वो चीज थोड़े से हमारे अंदर एक फुकदान होता है और रहा है, और शायद एंडोर्स भी करेंगे आप। दूसरा जो फैक्टर सर मैंने देखा है, वो हमारे यहाँ चूंकि हर वो जो चीज जो हम करना चाहते हैं वो अपने लिए उसको एक्सक्लूड माइनस में करके करते हैं। जो आपने कहा था ना मी वाला, तो माइनस में करके जब हम दूसरों पे अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, तो शायद दिस इज अगेन वन ऑफ द हर्डल्स that makes us not to move towards the right desired direction. तो ये मेरे थोड़े comments थे, hopefully you'll address these things. So thank you very much sir for all this. Thanks a lot. I think सर मैं ये कुछ कहना चाहूंगा सर कि रात को जागने का मकसद ये है कि कुछ स्टूडेंट्स पढ़ रहे होते हैं, मेडिकल स्टूडेंट्स को रात को जागने की आदत होती है। एमबीबीएस के 4th ईयर फाइनल ईयर में आकर रात को पढ़ना पड़ता है ताकि हम अपनी प्रॉफ सीजन पास कर सकें, और मेडिकल एलाइड साइंसेज के स्टूडेंट्स को भी रात को बैठ के पढ़ना पड़ता है, तो मिडनाइट ऑयल तरह बंद करना पड़ता है। जी डॉक्टर आफ्ताब, यू कैन रिप्लाई। हाँ, मैं कह रहा था कि वो क्वेश्चन जो सर ने किया था और कमेंट था बेसिकली, तो आई थिंक मैडम आई एम जस्ट सजेस्टिंग कि जब हमारे लोग कंसल्टेंट्स भी बन जाते हैं और नए कंसल्टेंट्स जहाँ भी कहीं हायर होते हैं, तो उनको शुरू में एक लीडरशिप कोर्स करवाया जाए, जैसे कि इंग्लैंड में, अमेरिका में करवाया जाता है। यू बिकम अ न्यू कंसल्टेंट, यू बिकम अ न्यू असिस्टेंट प्रोफेसर इन अ मेडिकल कॉलेज, यू गेट अ 3-day कोर्स ऑन हाउ टू इम्प्रूव योर लीडरशिप स्किल्स। तो दैट वुड हेल्प अ लॉट ऑफ थिंग्स। उस कोर्स में फिर ज़ाहिर आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस के ऊपर बात होती है, तो दैट वुड हेल्प। अच्छा, इसमें बिलाल साहब ने जो सवाल किया है, तो मैडम जो बिलाल साहब ने जो सवाल किया विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि हमें रात को ही मेडिकल कॉलेजेस में जो पढ़ाई होती है रात को ही हमें पढ़ने का टाइम मिलता है या रात को ही पढ़ते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात की उन्होंने। मैं भी इसी को करता हूँ कि जो मेरे पास स्टूडेंट्स या प्री मेडिकल या मेडिकल के लाते हैं वो यही करते हैं रात को देर तक। तो मैं समझता ये हूँ बिलाल कि आप इसकी टाइम को मैनेज करें। आप अगर रात को जब शुरू करते हैं पढ़ाई, वो रात को आप 12 बजे 1 बजे पढ़ाई शुरू करते हैं, तो आप क्यों आप उस टाइम को अवेल करते हैं? आप शाम को मगरिब के बाद से 12 बजे तक पढ़े, 11 बजे तक करें और फिर अच्छी नींद ले लें, उसके बाद सुबह फजर के बाद उठ के दोबारा पढ़ें, तो आप टाइम मैनेज कर सकते हैं। इंस्टेड ऑफ कि आप रात को ही आपने एक चीज सोच ली है कि नहीं रात को ही पढ़ाई अच्छी होगी और रात को ही पढ़ना सही रहता है। मैं कहता हूँ अपनी सेहत भी देखें और फिर पढ़ाई भी करें, टाइम को मैनेज करें, मेरा ख्याल है। That's a very nice thing you said, Dr. Kesar, क्योंकि इसके ऊपर मैंने काफी रिसर्च की थी when I was a student. तो अगर जी आप जी रात के मैं 12 कमेंट बजे कर दूं सो इसके ऊपर। जाते, कौन? मैं भी एक कमेंट इसके ऊपर कर रहा हूँ। अगेन हाँ बिल्कुल देखें, बिल्कुल जी डॉक्टर साहब। आफ्ताब। मैं ये बिलाल साहब को ये कह रहा था कि अगेन ये आपने अपने आप को तैयार करना है। फॉर एग्जांपल, आई मीन आई नो इट वर्क्स डिफरेंटली फॉर एवरी पर्सन, बट जस्ट एग्जांपल फ्रॉम माय पर्सनल लाइफ, व्हेन आई वाज अ मेडिकल स्टूडेंट, तो मैं सुबह के वक्त जल्दी उठ जाता था, नमाज पढ़ लेता था सुबह, और 5 बजे से 8 बजे तक 3 घंटे मैं उस वक्त पढ़ लेता था। फिर कॉलेज से आके उसके बाद 2-3 घंटे पढ़ लिया, फिर शाम को एक्सरसाइज करके डिनर के बाद 2 घंटे पढ़ लिया। सो आई मीन इफ यू आर इन रियली इनटू स्टडीज एंड इफ यू वांट टू मेक बेस्ट यूज ऑफ योर टाइम, तो आप अपनी लाइफ को रेगुलेट कर सकते हैं। अपनी नींद इज इम्पॉर्टेंट ना। तो आई थिंक मेरा जो ख्याल है कि स्टूडेंट्स रात को लेट तक क्यों पढ़ते हैं, उसकी मेरे ख्याल में वजह यह है कि वो नींद उनकी नज़रों में इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो इस बात को हमें समझना होगा। अगर नींद आपकी नज़र में इंपॉर्टेंट है और आपको पता है कि अच्छी नींद के बगैर यू विल नॉट बी मेंटली एंड फिजिकली फिट इनफ, तो फिर आप नींद को इंपॉर्टेंस देंगे और अपनी पढ़ाई को अब नींद के इर्द गिर्द फिर एडजस्ट करेंगे। थैंक यू सो मच डॉक्टर आफ्ताब। इसमें यही है कि सर्केडियन रिदम के मुताबिक ही हमें चलना है, तो हमारी बॉडी बेस्ट ऑप्टिमम कंडीशन में रहेगी एंड इवन इमोशनली वी विल बी बेटर। दूसरा, अगर आप देखें ना, अल्लाह पाक ने कहा है कि आप इशा के बाद सो जाएं तहज्जुद के लिए फिर उठें, वरना अल्लाह पाक ये तो हमें कहते कि आप जी तहज्जुद तक जागते रहें, फजर तक जागते रहें। दीन ने एक चीज हमारे लिए बता दी है, सो दैट इज द बेस्ट वे वी वर्क ऑन दैट। एंड एज फार एज डॉक्टर कैसर ने माइंडफुलनेस की बात की ड्यूरिंग ईटिंग, तो जो बड़े वलीउल्लाह हैं हमारे दीन के, वो यही कहते हैं हरने वाले के साथ बिस्मिल्लाह कहें, और जब आप खा रहे हो उस वक्त दिल में शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करें। दैट मेक्स यू वेरी वेरी माइंडफुल to what you are eating, what you are doing. So there are little things which our faith teaches us, but if we grasp it.
And I think there are 3 other people who raised their hand, Saqib Hussain साहब and Rashid Mahmood साहब. सतार साहब आपने तो पूछ लिया है, तो आप साकिब साहब आप बोलें और फिर राशिद साहब. थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी डॉक्टर साहब, बहुत ही यूजफुल वेबिनार. और एक छोटा सा मेरा क्वेश्चन है कि वो कौन सा पॉइंट होगा जहाँ पे एक शख्स ये डिटरमिन करता है कि अब मुझे मेडिकल हेल्प की ज़रूरत है. बहुत सारी चीज़ें तो आपने बताई, वो तो पर्सनल लेवल पे हैं, बट व्हाट इज़ द टर्निंग पॉइंट जब हम ये डिसाइड करते हैं कि नाउ वी हैव टू कंसल्ट अ डॉक्टर? सर, जब आपकी जो आपकी डे टू डे फंक्शनिंग इफेक्ट होना शुरू हो जाती है. मैं तो साइकेट्रिस्ट हूँ, और हम जो डायग्नोसिस के लिए जो मैनुअल इस्तेमाल करते हैं वो ICD-11 या DSM-5 है. और हमारी जितनी भी बीमारियों का क्राइटेरिया है, उस क्राइटेरिया में हमेशा एक बात लिखी होती है कि व्हेन इट स्टार्ट्स टू इफेक्ट योर फंक्शनिंग, योर पर्सनल, सोशल एंड फैमिली फंक्शनिंग. तो जब किसी भी प्रॉब्लम की वजह से आपके कामकाज में, आपके रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम आना शुरू हुए, तो वहाँ पे आपको हेल्प सीख करनी चाहिए. और व्हेन इन डाउट फिर भी हेल्प सीख करनी चाहिए. देखें, एज ए साइकेट्रिस्ट हम एक बात हमेशा कहते हैं, वो कहते हैं स्टिग्मा एंड डिस्क्रिमिनेशन अटैच टू मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स, एंड दैट वी फील इज अ बिग बैरियर, not only for the patients in terms of seeking help, but also for recruitment in psychiatry. आप हमारे मेडिकल कॉलेजेस में देखें, आप किसी भी क्लास में जाके पूछें कि आप में से कितने लोग जो हैं वो साइकेट्रिस्ट बनना चाहते हैं, तो शायद एक स्टूडेंट भी हाथ खड़ा नहीं करेगा, क्योंकि दे डोंट फाइंड साइकेट्री ग्लैमरस इनफ, या उनको ये लगता है कि इतना पैसा खर्च करके हम साइकेट्रिस्ट क्यों बने. तो ये तो वैसे बात होगी, लेकिन आपका जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है वो इस बारे में है कि आप किस पॉइंट पे सीख हेल्प करें. उस पॉइंट पे हेल्प सीख करें जहां पे आपको पता चल जाए कि आपकी जिंदगी इफेक्ट हो रही है. और एक और बात सर मैं यहाँ पे कहूँ कि हम साइकेट्रिस्ट सर ये स्टिग्मा में इन्वॉल्व है कि वो पागलों के डॉक्टर होते हैं, वो खुद भी पागल मेंटल उसको पढ़ते रहते हैं, और ये स्टिग्मा काफी हद तक पाकिस्तान में ये लगा हुआ है कि वो मेंटल. तो सर नहीं जी, ऐसी जो तो कोई बात नहीं है. आई थिंक डॉक्टर आफ्ताब इज वन ऑफ द मोस्ट नॉर्मल पर्संस आई हैव एवर कम अक्रॉस. नहीं, और मैं मेरी मैडम जो जो सबसे बड़ी बेटी है, हेरा, इंग्लैंड गई है, वो भी इंशाल्लाह साइकाट्रिस्ट बन रही है. नहीं मैडम, ये स्टिग्मा जो है ना, इट्स इम्पॉर्टेंट कि वी आर एबल टू एड्रेस स्टिग्मा. और स्टिग्मा को कम करने में एक इम्पॉर्टेंट जो रोल है मेरे ख्याल में, वो हमारा मेडिकल कॉलेजेस के करिकुलम में मेंटल हेल्थ, साइकेट्री, बिहेवियरल साइंसेज, इसका इन्वॉल्व होना और इस सब्जेक्ट को वेटेज देना भी बड़ा इम्पॉर्टेंट है. हमने जो ओवर द ईयर्स देखा है कि जो स्टिग्मा जनरल पॉपुलेशन में तो है ही है, लेकिन स्टिग्मा अमंग आवर कॉलीग्स इन कार्डियोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, मेडिकल स्पेशलिस्ट, स्किन स्पेशलिस्ट, उनमें भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उनकी अपनी अंडरस्टैंडिंग भी साइकेट्री के बारे में ना होने के बराबर है. थैंक यू डॉक्टर आफ्ताब. राशिद साहब आप पूछे एंड देन वी विल वाइंड इट अप. राइट, थैंक यू सर मकुंडी. डॉक्टर आफ्ताब असलम, बहुत अच्छा लेक्चर था स्ट्रेस मैनेजमेंट पे, और मैं इसको क्वेश्चन कह लें या कमेंट कह लें, बीइंग फिजियोलॉजिस्ट, डॉक्टर आफ्ताब ने जो चीज़ें बताई कि इससे स्ट्रेस रिलीव कर सकते हैं, तो उसके बिहाइंड पे शायद टाइम की कमी की वजह से नहीं बताया कि फिजियोलॉजिकली कुछ ऐसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो कि स्ट्रेस को मैनेज करते हैं, जो कि आपको हैप्पीनेस देते हैं. जैसे डोपामीन है, इट इज़ कॉल्ड द रिवार्ड केमिकल. जब आप कोई आप टास्क कंप्लीट करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, तो डोपामिन रिलीज होता है. एंडोर्फिन इज कॉल्ड पेन किलर. आप एक्सरसाइज करते हैं, हंसते हैं, डार्क चॉकलेट खाते हैं, एंडोर्फिन रिलीज होता है जो कि हैप्पीनेस काज करता है. इसी तरह सेरोटोनिन को कहते हैं मूड स्टेबलाइजर, जो कि रनिंग से, एक्सरसाइज से और मुख्तलिफ चीज़ों से, सन एक्सपोजर से रिलीज होता है. ऑक्सीटोसिन इज कॉल्ड लव हार्मोन, जो कि बच्चों के साथ खेलना, फैमिली के साथ हग करना, लव के साथ, कम्प्लीमेंट के साथ ज़्यादा होता है. और जो दूसरी चीज़ मैं एक इन्फॉर्मेशन के तौर पे कहना चाहूँगा, कैसर साहब ने टाइम मैनेजमेंट की बात की, जो भी यहाँ मौजूद हैं मैं ग्रुपों में शेयर कर दूँगा. कमिंग मंडे 20th को एक कॉन्फ्रेंस में प्री कॉन्फ्रेंस वर्कशॉप है टाइम मैनेजमेंट पे, मैं उसको फैसिलिटेट कर रहा हूँ. मैं ग्रुप्स में उसके शेयर कर दूँगा लिंक वगैरह. एनीबॉडी हू वांट्स टू अटेंड, तो वो टाइम मैनेजमेंट की 3 घंटे की वर्कशॉप है, वो भी अटेंड कर सकते हैं. थैंक यू वेरी मच. Thank you, Rashid Saab. I think then nobody else is going to ask a question. Thank you, Aftab Saab. I'm really, really grateful to you. Lekin I will give it to Dr. Kaisar now for a vote of thanks to you. Kaisar Sajjad. Thank you. Thank you very much,
Madam, my worthy President, Pakistan Medical Association. It was a 30th PMA webinar, और I am extremely thankful to Dr. 90th, Aftab 90th. Aslam. Let me correct you, 90th, yes. Captain, by 90th year, 90 साल हो गए हैं, 90 महीने हो गए हैं मेरे ख्याल में, 90 वेबिनार हो गए हैं हमारे। 90 सही है? वेबिनार हो गए। हाँ जी, एवरी वीक जी एक जी वेबिनार, मतलब हाँ 2.5 साल जी तकरीबन। जी जी। तो ये मैं समझता हूँ आज मैं मिस कर रहा हूँ मुलाजिम साहब को, और वो बहुत अच्छा करते हैं, हम तो वो इतना अच्छा बोल नहीं पाते हैं। मुलाजिम साहब वाज आई मीन ही वाज डूइंग वेरी एक्सीलेंट वर्क फॉर रनिंग दिस वेबिनार, एंड ये जो विजन था ये मैडम डॉक्टर सलमा कुंडी का, और बहुत अच्छा मैं समझता हूँ कि अब तक 90 हो गए हैं। तो एनी हाउ, थैंक यू वेरी मच आफ्ताब आलम साहब, आपसे आज हमने बहुत तालीम बालगान का प्रोग्राम बड़ा अच्छा किया आपने हमारी, बहुत हम बहुत कुछ सीखा हमने आज को, और हम कोशिश करेंगे कि जितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं वो जो कुछ अच्छी बातें हैं उनको पता लगी तो वो और लोगों को भी बताएं और उस पर इम्प्लीमेंट भी करें और करवाएं भी, खासकर जो रात को सोने वाली बात की है उन्होंने, तो ये मेरे ख्याल में बहुत अच्छा है। और 7 to 8 आवर्स, तो हमारा वेबिनार का मकसद भी यही होता है कि हम कुछ सीखें यहाँ से, और सीख कर दूसरों को भी पास करें कि भी आज हमने पीएमए के वेबिनार से ये सीखा और उस पर इम्प्लीमेंट करें। तो थैंक यू वेरी मच ऑल द पार्टिसिपेंट ऑल्सो, कि जो संडे के दिन आपने 1 घंटा हमारे लिए आई डोंट नो जाया किया या फायदा किया, बहुत अच्छा अपने लिए किया। और मैं समझता हूँ कि ये कंटिन्यू रहेगा इंशाल्लाह ताला, और डॉक्टर सलमा कुंडी और मुलाजिम साहब इंशाल्लाह ताला इसको दिन ब दिन अच्छे से अच्छा करते हैं, और स्पीकर भी बहुत अच्छा लाते हैं, उनको प्रेजेंटेशन की बड़ी जबरदस्त होती है, लाइक आज जिस तरह डॉक्टर आफ्ताब आलम साहब ने प्रेजेंटेशन की। तो अगेन थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू, पर्टिकुलरली डॉक्टर आफ्ताब आलम साहब एंड डॉक्टर सलमा कुंडी जो उन्होंने आज कंडक्ट किया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू कैसर साहब। थैंक यू यू। आफ्ताब। वी होप टू सी यू नेक्स्ट टाइम किसी और टॉपिक के ऊपर, मे बी जो सा भी आपके नजदीक हो। ये तो स्ट्रेस मैनेजमेंट का था, maybe how to cope with other life challenges or something like that. And I thank all the audience, everybody in the audience. We have got a nice group of audience over here who are very, very committed to our webinars. Allah bless you all. Have a nice weekend. Allah Hafiz. Thanks for inviting. Khuda Okay, Hafiz. thank you very much. Thank you, Aftab. Thank you again.